welcome back to my channel. I hope you guys are doing extremely well. So in this video I'm going to talk about the best resources for IELTS preparation. Now why is it important? So when I started studying for IELTS, I realized that there is humongous amount of information available on internet. So if you start studying from random websites, links, videos, you would definitely end up messing everything. So it is important that you find the right website, the right video or the right practice papers for your IELTS preparation. Also, one thing that I realized later, that there were practice tests on internet which were not even related to official test format. So make sure that you are aware of the format as well. So the quality of information really matters, and that is why I decided to share a number of resources that I personally used for my IELTS preparation. So first, if you are new and you have no idea about the IELTS and the IELTS test format, please make sure that you first read about that. One website that can help you with it is IELTS.org. तो इस वेबसाइट पे आपको सारा मटेरियल अबाउट आइल्स टेस्ट फॉर्मेट पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा. Moving further, now let's talk about the websites that you can refer for studying. Definitely there are number of websites that are quite good. However, I chose to stick to just 2 to 3 websites for my IELTS preparation. So the website that I'm going to tell you has complete information. कोई भी different type का question आता है उसको कैसे solve करना है with example आपको अच्छे से explain किया जाएगा. इन दोनों website पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. आपको कहीं और किसी और website पे जाने की कोई need नहीं होगी. आप बस इन दो websites को वो refer कर सकते हैं अपने IELTS के लिए. Okay, so let's talk about the two websites. First is IELTS List and next is IELTS Advantage. So these are the two websites I was literally dependent on for each module, be it reading, writing, speaking or listening. Also you can watch their videos where they have explained each and every type of question with examples और minute से minute details जो आपको चाहिए होती है IELTS एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सब कुछ इनकी वीडियोज़ एंड वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. So apart from these two websites, there is one more website that is Fast Track IELTS that I discovered a little later, but it is also a good one. Alright, so now let's talk about where you can find the practice test. Now I've been getting a lot of questions related to this. So I did from IELTS Cambridge books. I think 13 or 14 books होंगी, and you'll find both IELTS Academic and IELTS General test in those books. तो वहाँ से तो definitely करना, because वो pattern and पूरा format आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एंड उनके प्रैक्टिस टेस्ट काफ़ी अच्छे हैं. तो डेफिनेटली सब बुक्स के वो प्रैक्टिस टेस्ट करना, एंड यू कैन ईदर डाउनलोड दोज बुक्स फ्रॉम इंटरनेट और यू कैन फाइंड इट इन योर लोकल बुक शॉप. नेक्स्ट जहाँ से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट किए थे, दैट इज़ फ्रॉम दिस वेबसाइट कॉल्ड IELTSexam.net. यहाँ पर भी आपको IELTS Academic एंड IELTS General दोनों के प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल होंगे. ओके, सो दीज वर द टू सोर्सेज जहाँ से मैंने प्रैक्टिस टेस्ट किए थे. एंड आप प्रैक्टिस टेस्ट कहीं और से भी कर रहे हैं, बट मेक श्योर कि आप IELTS Cambridge बुक्स से तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बिकॉज अगर Cambridge बुक से प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फॉर्मेट और पैटर्न पता चल जाता है. सो आप कहीं से भी प्रैक्टिस टेस्ट कर लें, नो प्रॉब्लम, बट IELTS Cambridge बुक से करना मत भूलना. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Also, if you want to strengthen your English skills and widen your vocabulary, then you must watch Manjita Osta videos. I think वो भी एक IELTS official trainer है, उनकी videos से आपको काफ़ी help मिल जाएगी. अगर आपको vocab चाहिए for your writing और speaking में भी अगर आपको कोई vocab अच्छी use करनी है, तो आप उनकी videos को देखें. आपको काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपनी videos में explain किया है. So do check out her channel.
Okay guys, so I think I'll end this video over here, and my last advice would be to not to refer to a lot of different resources at the same time. Rather keep it simple and limited to few resources that you have selected initially, and learn as much as you can from those sources only. And now I will end this video, and if you like this video, please like, share and do subscribe to my channel if you haven't. I'll see you in my next video.